Hi, so this is end of 12th of July and we are going to do a quick sectorial analysis. So हम लोग आज जैसे हम लोग फर्स्ट हाफ में हम लोग मार्केट वॉच में हम लोग डिस्कस किए थे कि all the financial companies are looking really good. So हम देख सकते हैं कि ICICI Prudential Life, Manappuram और SBI Life closed at a day high. Together with LIC Housing Finance भी ऊपर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर PFC. मुथूट फाइनेंस भी यहाँ पे है. सो एंड हियर यू कैन सी ICICI GI में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है. But in overall, this financial space is moving better compared to banks. अगर हम टॉप इसमें देखते हैं तो ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया together with Axis Bank is in this upper quadrant, so it looks like these banks would be running good. इनमें जो पोजीशंस बन रही हैं, मन्नापुरम में अच्छी धीरे धीरे वो ट्रेंड में आ रही है एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर फेडरल बैंक. इट हैड अ वेरी गुड मूव टुडे. और LIC हाउसिंग फाइनेंस और PFC में कुछ ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई एंड सो इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर HDFC AMC as well as Nam India gave a good move sort of, lekin it was not much positions or it's not getting in trend. Or Bajaj Finserv made an all-time high and then eventually it dipped and then there was buying came in. लेकिन अभी going forward it seems like this trend is getting weaker और ये शायद अभी profit booking में कुछ जा सकती है. अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे on the financials we have HDFC Bank and HDFC Twins. It seems like short positions are getting added in these two, and together with that we can also see that Chola Finance is also had closed near day low. So financials में HDFC ट्विंस ट्रैक में करूँगा और बंधन बैंक में भी वीकनेस है. और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो मुझे ये फेडरल बैंक में ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखती है. और इसके अलावा मन्नपुरम इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम विच कैन गिव अ गुड मूव. सो वी हैव टू सी हाउ दिस गोज. इफ़ यू गो फॉर द नेक्स्ट सेक्टर, ऑटो में ज़्यादा कुछ positions बनी नहीं है except in Tata Motors. So Tata Motors was able to at least hold between 306 and 312. So this is good. Going forward हमें देखना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करती है. But again positions are getting added and slowly it's coming in trend. And so we have to see if if this weakness still continues in Tata Motors. सीमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन रहा. सुबह से हम लोग वो ट्वीट कर रहे थे और हमने कुछ ट्रेड भी लिया. सो ग्रासिम श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एंड अल्ट्राटेक इज़ इन द अपर क्वाड्रेंट. और रामको सीमेंट में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई टुवर्ड्स क्लोजिंग. और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक cement sector might be something which might give us a good trading opportunities maybe towards the end of this week after Thursday onwards. और बाकी अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स FMCG ये सेक्टर में FMCG सेक्टर में देखते हैं सो अमेरिको हैज़ इज़ अ गुड पोटेंशियल. इसमें पोटेंशियल है कि आज ये टूवर्ड्स डे लो क्लोज हुई है, लेकिन हो सकता है कि वो 530 रीजन्स में जाके वो कुछ सपोर्ट लेके कुछ रिवर्ट बैक करे. एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर बाटा इंडिया. हम लोग बाटा इंडिया के रिवर्सल्स के बारे में बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर बाटा इंडिया दैट 1570 1560 65 is acting like a good support since last 2-3 sessions. इसके अलावा कहीं भी कुछ ज़्यादा कुछ खास ट्रेंड में आई नहीं है एंड सो FMCG इज़ ऑल्सो नॉट वन ऑफ द सेक्टर्स वी वुड बी इंटरेस्टेड इन. दिस इज़ अबाउट IT में आप देख सकते हो कि विप्रो अगेन हैड सॉर्ट ऑफ a weak day and though it closed in positive, but it might be very well be a reversal candidate. ये हम लोग पहले भी वीकेंड में डिस्कस किए थे कि विप्रो में सिंस फ्यू सेशंस नाउ विप्रो में एक धीरे धीरे करके डाउनफॉल आके अभी ये कंसोलिडेट कर रही है बिटवीन 525 एंड 530. गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि विप्रो में शायद कुछ रिवर्सल आए एंड दिस इज़
Wipro and Emphasis, there is still weakness is getting created in Emphasis after it made an all-time high a few sessions ago, and this is also true for LTTS and also Mindtree. So यहाँ पे अभी धीरे धीरे ये ट्रेंड में आ रही है. For LTTS, we can say that 2900 may act like a very good sort of support जहाँ से उसकी breakout हुई थी, and maybe it will reverse from here. लेकिन Mindtree में भी अभी भी weakness जारी है. And this is steel sector. So steel was not a good sector, or steel, and on so you can see that sale, it went towards 127 from 122, and then there was a drastic fall in sale and also in Vedanta. और अगर हम देखें तो ये करीबन नीचे की तरह ही टाटा स्टील और NMDC है. द गुड थिंग इज पोजीशंस आर गेटिंग लिक्विडेटेड एंड नाउ इट्स कमिंग इन ट्रेंड. सो मे बी गोइंग फॉरवर्ड टाटा स्टील में कुछ 1200 रीजन में शायद उसको कुछ सपोर्ट मिले, और फिर हम देख सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें कुछ पोजीशंस बना सकते हैं कि नहीं. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर हिंडाल्को. सो इन जनरल द स्टील सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग लाइक प्रॉफिट बुकिंग हैज़ कम. और फार्मा में ग्रैन्यूल्स आज कुछ पोजीशंस ऐड हुई. फाइजर भी अच्छे से टुवर्ड्स डे हाई क्लोज हुआ, लेकिन इसमें अभी तक कोई मीनिंगफुल ट्रेंड आई नहीं है. सो इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू लुक इनटू वेयर दे आर पॉइज्ड, से लुपिन एंड सन फार्मा एंड टोरेंट फार्मा, सो दे आर जस्ट प्रॉफिट बुकिंग गेम, एंड यू कैन सी दीज आर higher wicks from the top. So basically it's not a very safe, and this is also true for say companies like Cipla. हम लोग ग्लेनमार्क में शॉर्ट पोजीशंस लिए थे, और ये रहा ग्लेनमार्क, एंड वी वे एबल टू क्लोज इट राउंड अबाउट एट द राइट टाइम एट 653 I think. And going forward, you see that there is not much of a trading opportunity. Maybe it's a buy in dips sort of concept which is coming out in pharma. So if we try to do a very quick look into the stocks which are in very strong trend. So the first thing is Federal Bank is at the end of the day in a very strong trend, and other than that Coromandel में एक breakdown आई है, and we were able to trade this. ये मैं over the weekend भी बोला था कि 880 890 region में एक breakdown अगर आई, so it seems like the positions are getting added. So right now Coromandel, if it breaks 880, then it would be a very good short opportunity, और एक बहुत अच्छी short trade होगी. इसके अलावा हम देख सकते हैं कि फेडरल बैंक में बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस एडेड हुए हैं, दो एट द इट वाज द क्लोजिंग कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है above 90 regions. So in going forward we have to see how Federal Bank works from here. Or if we look into say द टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स जिसमें कुछ पोजीशंस बन रही हैं ऊपर के लॉट में. यहाँ पे हम देख सकते हैं मन्नापुरम में पोजीशंस ट्रेंड में आ रही हैं, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर कंपनीज लाइक DLF, अंबुजा सीमेंट एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज टुगेदर विद श्री सीमेंट, ACC एंड टाटाकेम. सो टाटाकेम हैड अ गुड रन, बट अनफॉर्चुनेटली निफ्टी की वीकनेस की वजह से शायद ऊपर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट इट्स स्टिल इन द ट्रेंड, एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड इट विल ट्राई टू मूव. Tatachem में मैंने अच्छा एक ट्रेड लिया था, and I have also carrying it for BTST. So let's see how this opens up tomorrow, and if it's able to go beyond 782 levels. And granules में भी positions add हो रही हैं. This is actually a good thing. So granules may be poised if it is able to take out 377. So maybe it will try to go towards 400 in the short term. Or similarly HDFC AMC में भी कुछ अच्छी खासी profit booking आई है upper wick से. So going forward in general the market is looking really not stable and not really good for any trading. And in general I would suggest कि if you are in profit, I am booking out my profits. और it's also not giving ample short opportunities. ऐसे भी नहीं है कि आप शॉर्ट करके बहुत कुछ पैसा कमा सकते हो. So basically it's just like moving in a very 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 small range, and it's more like buy in dips and sell higher.
So this is the sort of market, and this is absolutely a trap for all the momentum traders out there. मैं भी ट्रेंड और मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कंपनीज में, जस्ट फॉर लाइक सीमेंस से फॉर एग्जांपल, it gave a good move in the morning, and then towards the end of the close you can see that there is an upper wick over here, and this is other way around. अगर आप बजाज फिनसर्व में देखते हो, so it dipped, and then theoretically it was able to come up. So from intraday trading perspective, it's not looking really good. Similarly, you can see Marico is also the trend is getting weaker, so maybe it will try to take some support at 530, and also this is Bandhan Bank. In general, there is not much direction in the market, and hence there is not much opportunity for trading. The whole market and the whole and most of the stocks, they are just going for in a very short narrow range. और ये हमें next video में discuss करूँगा, where we will go through all the charts. So this video was just to give you an idea about all the sectors, how they are performing, and whether there was any particular sector which would be standing out, but that's not the case. And also we have the name of the companies which are coming in trend. So, and also we have some potential candidates, one of them being L&TFH, and Tata Steel at 1200, and if Indus Tower is able to take any support in going forward. But one of the things which you have to understand, that the weakness in HDFC and HDFC Bank is something that we have to worry about. Reliance में as always यहाँ पे कुछ positions अभी भी बनी नहीं है, and so this is absolutely not in the trend, and it's also very much range bound. So going forward, I think the strategy should be very simple. It should be like very much like कि हम अपने जो भी प्रॉफिट में है ट्रेड्स, just like you can see Deepak Nitrate was going good in the morning, and then you can see all this upper wicks, or in most of the companies they have this upper wicks. So very few companies they were able to close, and few of them is DLF, AMBUJA Cement, Godrej Properties, ACC, Shrikam Cement, right? And also Grasim is over there, but unfortunately Grasim में से कोई positions बनी नहीं है. And this is also true for say ICICI Prudential, but they are not in trend, and Page Industries ये भी trend अभी उतनी mature हुई नहीं है. So thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you in taking your trading decisions. इसके बाद वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करके हम देखेंगे कि अगर हमें कुछ अच्छी चार्ट वाइज अगर कुछ पैटर्न्स easily दिखी for the next trading session, as well as for the next few sessions remaining in this week. Thanks a lot for listening, and bye bye.